ओके, सो आज हम लोग तीसरे टाइप का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी सीखने वाले हैं। हमने सबसे पहले देखा व्हाट इज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ लेंथ। फिर हमने देखा व्हाट इज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ वॉल्यूम। मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट यंग्स मॉडुलस हियर एंड आई एम टॉकिंग अबाउट bulk modulus here, and today we are going to learn about modulus of rigidity मतलब elasticity of length। तो बहुत सिंपल है। The next in the list is, if I am not wrong, modulus of rigidity. Modulus of rigidity, eta। इसको elasticity of shape भी बोला जाता है, राइट। तो जैसे आप लोगों ने यंग्स मॉडल्स डिफाइन किया था टेंसाइल स्ट्रेस अपॉन टेंसाइल स्ट्रेन, तो y इक्वल टू mgl बाय pi r square delta l आया था। Then you have defined bulk modulus, which is vdp upon dp with a negative sign। तो यंग्स मॉडल्स आपको बताता है हाउ मच इज द रेजिस्टेंस offered by the body to change in its length, and modulus bulk modulus, which is elasticity of volume, ये आपको बताता है how much is the resistance offered by material to change in its volume। वैसे ही आपको modulus of rigidity eta बताता है how much is the resistance offered by a body to change in its shape, right। इसके लिए आपको वापस एक क्यूब कंसिडर करना पड़ेगा, एंड बिकॉज आई एम लिटिल लेजी, तो आलसी लोग क्या करते हैं, वो पिछले लेक्चर्स में से डायग्राम को कॉपी कर लेते हैं। तो मैं वही करने वाला हूँ, बिकॉज आई एम लेजी एंड आई लाइक टू बी लेजी। तो मैं क्या करूँगा, मैं ये डायग्राम यहाँ से कॉपी पेस्ट करूँगा। कॉपी and we'll go to today's session here and I'm going to paste it over here। yes, तो if you remember, हम लोगों ने एक क्यूब लिया था जिसका हमने बेस फिक्स किया है और ऊपर हमने टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई किया है टू चेंज द शेप ऑफ द क्यूब। ये एक तरीका है बोलने का। दूसरा तरीका ये भी था दैट इंस्टेड ऑफ सेइंग कि नीचे का जो बेस है उसको फिक्स कर किया है, ऐसा बोलने की जगह पे हम लोग बोल सकते हैं कि हमने नीचे भी एक टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई किया है। तो जब आप दोनों सरफेस पे टॉप एंड बॉटम पे टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई करते हो अगर, तो उस केस में शेप चेंज होता है। सिंपल चीज है, या तो आप बेस को फिक्स कर दो, सिर्फ ऊपर टेंजेंशियल फोर्स लगाओ, या फिर आप ऊपर और नीचे दोनों जगह पे टेंजेंशियल फोर्स लगाओ। इट विल ब्रिंग change in the shape of a body, right? So it's one and the same thing। So I will prefer to say that the base is fixed, right? Then जैसे Young's modulus measures resistance of the body to the change in length, वैसे ही modulus of rigidity eta measures resistance offered by solid while an attempt is made to change its shape। So it is basically resistance offered by body to change in its shape, right? So as we know already, हमने shearing stress already define करके रखा है। We have seen what is shearing stress। Shearing stress was nothing but tangential force upon area, and if you remember, हमने shearing strain भी define किया था। अगर आपको याद होगा तो shearing strain define करते तो मैंने बताया था आपको, it is relative displacement of any layer। मतलब I have told you that relative displacement of any layer मतलब ऊपर का लेयर डिस्प्लेस हो रहा है, और डिस्प्लेसमेंट कितना है, h h डैश e e डैश
F F dash and G G dash. Okay, right. तो ये है रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ टॉप मोस्ट लेयर. मैं वो लेयर कहीं भी ले सकता था. आई कुड हैव टेकन लेयर हियर. मैं यहाँ भी एक लेयर ले सकता था, बिकॉज इट्स अप टू अस विच लेयर डू वी वांट टू टेक. मैंने टॉप मोस्ट क्यों लिया? समझने में इजी होता है, क्योंकि मुझे टॉप मोस्ट लेयर h का a के साथ डिस्टेंस पता है, इसलिए लिया. क्योंकि क्यूब है तो उसका साइड लेंथ l होगा. दैट्स व्हाई मैंने टॉप मोस्ट लेयर लिया. इट इज नॉट एट ऑल कंपल्सरी टू टेक टॉप मोस्ट लेयर. आप कोई भी लेयर ले सकते हो, बट shearing strain is displacement of any layer divided by its distance from the fixed layer. अगर h ये जो लेयर है जो शिफ्ट हुआ, डिस्प्लेस हुआ, राइट, तो h dash is the lateral displacement upon the distance of h from a. ये लेना पड़ता है हमको, डेफिनेशन ही है. तो आई कैन से ha और आई कैन से e dash upon ed और आई कैन से ff dash upon fc और आई कैन से gg dash upon gb. राइट. तो just to tell you, normally I like to use notations as इसके लिए L बोलता हूँ, इसके लिए डेल्टा L बोलता हूँ. इससे क्या होता है? इससे shearing strain का जो फॉर्मूला है ना, it becomes same as that of longitudinal strain. तो इसलिए I normally prefer to write this as GG dash HH dash EE dash ये डेल्टा L है, change in length upon original length. तो आपको ये याद रहेगा कि shearing strain is nothing but is same quantity analogous to, similar to longitudinal strain. और अगर आपको पता है opposite side upon adjacent side ये होता है tan थीटा, तो shearing strain हमारा आएगा tan थीटा. ये ऑलरेडी हमने पहले करके रखा है, मैं सिर्फ रिवाइज करवा रहा हूँ. और for small थीटा tan थीटा is approximately equal to थीटा, ये भी हमने बोल के रखा है पहले. तो modulus of rigidity eta is nothing but it is the ratio of shearing stress to that of shearing strain. तो ये आपको मिलेगा shearing stress is nothing but tangential force upon area and shearing strain is approximately theta. तो eta, which is modulus of rigidity, is tangential force upon A into theta. Right? Easy here. There's nothing difficult over here. Simple thing. Right? मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ. We have seen what is elasticity of length, मतलब Young's modulus. We have seen what is elasticity of volume, मतलब bulk modulus. We know Young's modulus measures the resistance offered by a body to change in its length. Bulk modulus measures the resistance offered by a body to change in its volume. अब हमको देखना है तीसरे टाइप का modulus. So modulus of elasticity associated with change in shape of a body is called as modulus of rigidity. It is also called as elasticity of volume. Modulus of rigidity measures the resistance offered by a body, by a solid, to change in its shape. तो बॉडी खुद कितना रेजिस्ट कर रहा है शेप चेंज करने में, दैट इज व्हाट ईटा मेजर्स बेसिकली. तो हमने क्या किया? हमने क्यूब लिया, उसके बॉटम को फिक्स कर दिया, उसके टॉप मोस्ट सरफेस पे टेंजेंशियल फोर्स Ft अप्लाई कर दिया. तो टॉप मोस्ट मतलब बॉटम लेयर को छोड़ के सारा का सारा लेयर जो भी होंगे दे विल शिफ्ट. राइट. तो हमको नया शेप मिलेगा पैरेललोपिपेड A B C D E dash H dash D dash F dash. So you will have a new shape which is a parallelepiped and it is not a cube anymore. Right? Then shearing strain हमने define कैसे किया था? हमने बोला था relative displacement of any layer. कौन कौन सा लेयर?
मैं टॉप मोस्ट ले रहा हूँ उसका रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, मतलब रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट मतलब कितने से लेयर शिफ्ट हुआ। तो एच डैश भी लिख सकते हैं, ई डैश भी लिख सकते हैं, एफ डैश भी लिख सकते हैं, जी डैश भी लिख सकते हैं, राइट। डिवाइडेड बाय डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड लेयर। फिक्स लेयर से डिस्टेंस कितना है, एच ए या फिर ई डी या फिर जी बी या फिर एफ सी। तो हमको शेयरिंग स्ट्रेन मिल जाएगा। शेयरिंग स्ट्रेस तो हमको ऑलरेडी पता है, एफ अपॉन ए है। इसका मतलब हमको मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी मिल जाएगा इन शॉर्ट, राइट। तो नाउ वी विल बी राइटिंग डाउन एंड वी विल बी आल्सो रिवाइजिंग वंस अगेन बिकॉज दिस इज अ वेरी सिंपल थिंग, बहुत सिंपल टॉपिक है। सो द मॉड्यूलस ऑफ elasticity associated with the change in shape of a body, with the change in shape of a body is called as modulus of rigidity. Modulus of rigidity. It is also called as, just a minute. It is also called as elasticity of shape. It is also called as elasticity of shape, right. So modulus of rigidity measures resistance offered by a solid, resistance offered by solid while an attempt is made to change its shape, right. So let us consider a cube A, B, C, D, E, F, G, H as shown in figure, whose bottom surface is fixed. Consider a cube A, B, C, D, E, F, G, H, whose bottom surface ABCD is fixed and a tangential force F suffix T is applied to its top surface EFGH as shown in figure. Right. So
Now the shape of the cube changes and becomes a parallelepiped due to the applied force because of lateral displacement of different layers. Simple है. So the shape of the cube changes due to applied force because of lateral displacement. lateral displacement का मतलब क्या होता है वो समझेगा आगे जाके. because of lateral displacement मतलब सिर्फ displacement है समझ लो. h से h dash हो गया, e से e dash हो गया. lateral displacement of its different layers of its different layers different layers. The new shape is parallelepiped. The new shape is a parallelepiped. A, B, C, D, E dash, F dash, G dash, H dash. Right. So अब what we know is we know that shearing stress is equal to tangential applied force per unit area and shearing strain is equal to relative displacement of layer relative displacement of any layer upon, और ये हमने already करके रखा हुआ है, so you should be knowing this. It's just that we are revising it over again. इतना ही है. So relative displacement of layer of any layer divided by its distance from the fixed layer, its distance from the fixed layer. और हमको पता है relative displacement मतलब मैंने अभी बताया आपको E E dash ये relative displacement है और इसका distance है DE from fixed layer या फिर F F dash ये displacement है और FC या फिर CF ये distance है from fixed layer, G G dash ये displacement है and BG is distance from fixed layer या फिर H dash is displacement and AH is its distance from the fixed layer and that is nothing but tan theta. ये होता है tan theta. So shearing strain is nothing but tan theta and if theta is small then you have shearing strain equal to tan theta which is approximately equal to theta, right? Therefore eta which is modulus of rigidity
is equal to shearing stress upon shearing strain. तो हम बोल देते हैं पहले modulus of rigidity is defined as modulus of rigidity is defined as the ratio of as the ratio of shearing stress to that of shearing strain to that of shearing strain. Therefore, you have eta is equal to ft by a by theta, which is ft by a theta. ये हो गया आपका मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी का डेफिनेशन, राइट। तो बहुत सिंपल सा केस था, इट इज एक्सट्रीमली सिंपल केस, नथिंग देयर। सो देन next thing that we want to define is Poisson's ratio. इंटरेस्टिंग चीज है Poisson's ratio, और इस पे नीट जेडब्ल्यू में क्वेश्चंस आते हैं Poisson's ratio पे, so you should be knowing what is Poisson's ratio. So next topic is Poisson's ratio. Poisson's ratio, sigma. It is pronounced as Poisson, not poison. It is not poison, it is Poisson. So it is Poisson's ratio. Okay, जैसे आप वो बोलते हो एल हॉस्पिटल्स रूल, वो लापितास रूल होता है बेसिकली, because they are European and they have some kind of different pronunciation. So I hope you understand. Right, so Poisson's ratio में क्या होता है, बहुत सिंपल सी चीज है। ऐसा है, मान लेते हैं हम लोग कि हमारे पास एक वायर है, मान लेते हैं एक वायर है, और हमको पता है वायर का क्रॉस सेक्शन होता है सिलिंड्रिकल, राइट। अब अगर मैंने एक स्ट्रेचिंग फोर्स अप्लाई कर दिया, तो ओरिजिनल लेंथ जो था वायर का वो कैपिटल एल था, मान लेते हैं। मैंने जैसे ही स्ट्रेचिंग फोर्स अप्लाई किया है तो लेंथ तो डेफिनेटली बड़ा है, लेकिन डायामीटर या रेडियस कम हुआ है। सो देयर इज चेंज इन लेंथ विच इज डेल्टा एल ऑफ द वायर, राइट, है ना। लेंथ बड़ा है डेफिनेटली, बट डायामीटर या रेडियस मतलब थिकनेस ऑफ द वायर कम होगा। और क्यों कम होगा, उसका रीजन है क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है। अगर मेरे पास एक वायर है जिसका वॉल्यूम 10 मीटर क्यूब है, तो वो 10 मीटर क्यूब ही रहेगा हमेशा, वो क्यों चेंज होने लगा। मैंने स्ट्रेच किया, वायर का लेंथ बढ़ा तो थिकनेस कम होगा। मतलब ऐसा है कि जब भी हम वायर पे फोर्स लगाते हैं, राइट, सो व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड टू अ बॉडी along any direction, there is change along the direction in which the force is applied. जब भी हम एक बॉडी पे फोर्स लगाते हैं तो दो डायरेक्शन में चेंज होता है। एक तो जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया वहां पे मतलब चेंज इन लेंथ हुआ, और उसको परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मतलब यहाँ पे कंप्रेशन हुआ। So when a force is applied to a body along any direction, there is number one, change in size along the direction of force. Two, change in size in a perpendicular direction, right? So if you apply a force to the free end of wire, the wire gets elongated, but this elongation, stretching, is accompanied by
is accompanied by change in diameter as well. मतलब वहां पे अगर longitudinal extension है, लेंथ बढ़ता है तो longitudinal बोलते हैं, राइट? और डायमीटर कम होना, रेडियस कम होना, कंप्रेशन होना, कॉन्ट्रैक्शन होना, उसको बोलते हैं lateral contraction. Okay, so longitudinal extension of a wire is always accompanied by lateral contraction. Contract मतलब छोटा होना, right? Okay, then according to Poisson's ratio within elastic limit, मतलब वो Poisson's ratio क्या हम देखेंगे, but there is something which says within elastic limit. मैंने आपको elastic limit का मतलब समझाया है already. Within elastic limit, lateral strain is directly proportional to longitudinal strain. Lateral strain is directly proportional to longitudinal strain. मतलब lateral strain is equal to some constant into longitudinal strain, और ये जो some constant है इसको बोलते हो Poisson's ratio. So lateral strain is Poisson's ratio into longitudinal strain. मतलब Poisson's ratio is the ratio of lateral strain to that of longitudinal strain. Lateral strain to that of longitudinal strain. और lateral strain मतलब diameter या radius कम होना, तो आप इसको लिख सकते हो, this is delta d by d, change in diameter upon original diameter, upon change in length upon original length, because that is longitudinal strain, but with a negative sign, क्योंकि diameter कम हो रहा है, तो यह आएगा आपका delta d into L upon delta L into d, या फिर आप इसको लिख सकते हो माइनस डेल्टा आर बाई आर, डायमीटर चेंज होना मतलब रेडियस चेंज होना, अपॉन डेल्टा एल बाई एल, राइट? तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हमेशा डेल्टा एल बाई एल होता है, और लैटरल स्ट्रेन इज चेंज इन डायमीटर अपॉन ओरिजिनल डायमीटर, और चेंज इन रेडियस अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ओरिजिनल रेडियस, एंड इट इज ऑलवेज accompanied विद अ नेगेटिव साइन. ये नेगेटिव साइन के साथ आता है क्योंकि डायमीटर या रेडियस में चेंज हो रहा है, इसके लिए नेगेटिव साइन आता है यहाँ पे. करेक्ट, राइट? सो दिस इज इंपॉर्टेंट. और ऑफ कोर्स क्योंकि ये रेशियो ऑफ स्ट्रेन टू दैट ऑफ स्ट्रेन है, तो ये डायमेंशनलेस होगा. ऑलराइट, सो आई एम गोइंग टू रिपीट एवरीथिंग अगेन एंड देन वी विल मेक नोट्स. तो ऐसा है कि जब हम लोग टेंसाइल स्ट्रेन या फिर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन सीख रहे थे, वी मिस्ड आउट ऑन समथिंग. हमने बोला कि हमने वायर को एक लोड लगा दिया, उस लोड की वजह से लेंथ बढ़ गया. हाँ, बढ़ गया, उसको लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन भी बोल दिया हमने. चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ को लॉन्गिट्यूडनल या टेंसाइल स्ट्रेन भी बोल दिया. बट व्हाट वी फॉरगॉट कि जैसे लेंथ बढ़ेगा, वायर का वॉल्यूम मतलब मटेरियल तो सेम ही है ना. वी आर नॉट पुटिंग एनी एक्स्ट्रा मटेरियल इन द वायर, जितना था उतना ही है. तो वॉल्यूम, बिकॉज वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, तो अगर लेंथ चेंज हो रहा है तो डायामीटर में या थिकनेस में या रेडियस में डिक्रीज होगा. करेक्ट? इसका मतलब जब भी आप एक बॉडी पे फोर्स अप्लाई करते हो तो दो डायरेक्शन में चेंज होता है, एक तो फोर्स डायरेक्शन में, एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में. तो चेंज इन लेंथ मतलब लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंशन is always accompanied by change in diameter मतलब lateral contraction. Within elastic limit, lateral strain is directly proportional to longitudinal strain. So lateral strain is equal to sigma into longitudinal strain. This sigma is called as Poisson's ratio because it is the ratio of lateral strain to that of longitudinal strain. Good. Then अब हम लोग लिख लेंगे because you should know all this theory. You are supposed to write this in exam. So when a force is applied
is applied to a body along any direction, along any direction, there is number one, change in size, change in size along the direction of the force, along the direction of force. Number two, change in size in perpendicular direction, in perpendicular direction, right? So if a force is applied to the free end of a metallic wire, if a force is applied to the free end of metal wire, it gets elongated. This elongation is accompanied by decrease in diameter. This elongation is accompanied by decrease in diameter. Hence, longitudinal extension is accompanied by lateral contraction. Okay, this lateral contraction is called as lateral strain. So hence, change in diameter or radius, change in diameter or radius per unit original diameter or radius is called as diameter or radius is called as lateral strain. Right. So within elastic limit, स्ट्रेस, कौन सा स्ट्रेस? यहाँ पे स्ट्रेस की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल और लैटरल स्ट्रेन की बात हो रही है. विद इन इलास्टिक लिमिट, lateral strain is directly proportional to longitudinal strain, right? Therefore
We can write down this as lateral strain is proportional to longitudinal strain. Longitudinal strain. मतलब therefore lateral strain is equal to sigma into longitudinal strain. So therefore sigma is equal to lateral strain upon longitudinal strain. ये जो सिग्मा लिखा है हमने, this sigma is called as Poisson's ratio. मैं लिख देता हूँ यहाँ पे where sigma is called as Poisson's ratio. Therefore Poisson's ratio is defined as the ratio of lateral मतलब transverse strain to that of tensile मतलब longitudinal strain. Therefore Poisson's ratio is defined as the ratio of lateral strain to the longitudinal strain. And therefore sigma is nothing but lateral strain. आपको पता है lateral strain is delta d by d और delta r by r. एक काम करते हैं, let me better increase little bit part of theory, but better is to write down everything that we need. So that is going to be a better thing to do. Just a minute. Yeah, I know I'm not doing good thing by wasting time, but longitudinal. I don't like things to be improper. Good enough. अब अच्छा दिखेगा ये. Yeah, nice. So जगह भी बन गई and we can now write down, but lateral strain is equal to delta d by d with a negative sign, or it is delta r by r with a negative sign, of course, right? Where delta d is change in diameter and delta r is change in radius, right? And you already know what is longitudinal strain, पहले ही हुआ है. Therefore sigma is equal to minus delta d by d upon delta L by L, which is minus delta R by R upon delta L by L. That's it. So what we have done today is हमने मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी देखा, कुछ भी नहीं है ये, शेयरिंग स्ट्रेस अपॉन शेयरिंग स्ट्रेन है. दैट्स इट. हमने शेयरिंग स्ट्रेस देख के रखा है क्या है, शेयरिंग स्ट्रेन देख के रखा है क्या है. सो वी नो एवरीथिंग, राइट? सो इट इज Ft by A थीटा. देन पॉइजन्स रेशियो मतलब जब हम एक वायर का लेंथ इंक्रीज करते हैं तो लेंथ इंक्रीज होने के साथ डायमीटर या रेडियस कम होता है. तो डायमीटर या रेडियस कम होता है तो चेंज इन डायमीटर अपॉन ओरिजिनल डायमीटर को हम बोलते हैं लैटरल स्ट्रेन.
So lateral strain is directly proportional to longitudinal strain. So lateral strain equal to some constant into longitudinal strain. So lateral strain upon longitudinal strain, ये ratio जो होता है इसको बोलते हैं Poisson's ratio. That's it. So this is what we have done so far. Sufficient revision. बहुत simple सा case है. Right. So I'll stop here and we'll continue in the next session.